दिस इज May 2013 वेरिएंट 12। ठीक है, पुराना साल है। सिर्फ मैं केस रीड कर रहा हूँ, यू जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। May 2013 वेरिएंट 12 क्वेश्चन नंबर 5। पहले जो है ना 5 क्वेश्चंस होते थे पेपर 1 में, अब 4 होते हैं। 2016 से पहले जो है वो 4 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चंस होते थे और टाइम भी ज्यादा होता था। लेकिन आफ्टर 2016 एग्जामिनर हैज कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम 1 आवर 30 मिनट्स होता है। लेकिन क्योंकि ये पुराना ईयर है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी होता था। सही है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द केस एंड देन थोड़ा सा स्पीड तेज रखूंगा, ना समझ आए आप रोक देना मुझे। सही है। अच्छा, ANZ is a large multinational company which manufactures aeroplanes। एरोप्लेन्स बनाते हैं भाई। इट्स अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल का मतलब आपको पता है ना, मल्टीनेशनल एनी बिजनेस विद अ प्रोडक्शन facility in more than one country, right? नहीं समझ आया तो पूछ लेना प्लीज। ANZ is a large multinational company which manufactures aeroplanes. Growth is an important objective for the company. ANZ wants to start producing in country P for the first time. ठीक है, they are planning to enter into country P. सही है। The new factory will operate for 24 hours a day. A pressure group in country P believes that all business activity is bad for the environment. A pressure group पता है प्रेशर ग्रुप वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमारे या किसी भी ऐसे बिजनेस के अगेंस्ट स्टैंड लेती हैं जो बहुत ही कोई अनएथिकल एक्टिविटीज कर रही होती हैं या इलीगल एक्टिविटीज कर रही होती हैं। जैसे मीडिया होता है, अक्सर देखा होगा कि मीडिया में हमारे भी ARY पे पता नहीं किस तरह के शोज आ रहे होते हैं कि वो उधर छापा लग गया, रेड लग गई। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्टॉप all the unethical and illegal activities that businesses are doing in a country। और pressure groups इसमें क्या कह रहा है, a pressure group in country P believes that all business activity is bad for the environment। क्या हर बिजनेस एनवायरमेंट, क्या किसी भी एक बिजनेस के होने से एनवायरमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं? किसी बिजनेस के होने की, स्कूल की वजह से या हॉस्पिटल की वजह से या किसी फैक्ट्री की वजह से क्या कंट्री को कोई नेगेटिव या डाउनसाइड्स फेस करना पड़ते हैं? आर देयर एनी प्रॉब्लम्स ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी फॉर द कंट्री, फॉर एन इकोनॉमी? क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एक मुल्क को अगर एक बिजनेस चल रहा होता है तो इससे मुल्क को क्या प्रॉब्लम है? पोल्यूशन, वेस्ट। अगर जो बिजनेस का वेस्ट होगा वो डिस्पोज ऑफ करेंगे कहीं ना कहीं। पोल्यूशन होगा, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जाहिर है वो फिर अगर बिजनेस एक्टिविटी रन होगी तो उसमें फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज भी कंट्री के यूज करेंगे। तो जितना ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतना ज्यादा हमारे मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो द नेचुरल रिसोर्सेज में स्टार्ट टू डिप्लीट, राइट? और इम्पोर्ट्स, गुड, इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ेगा शायद, तो फिर वो एक करेंसी के ऊपर बर्डन होगा। तो यानी कि एक बिजनेस के होने से नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते तो हैं एनवायरनमेंट की, जो बात है। लेकिन लेकिन पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं। आर देयर एनी पॉजिटिव साइड्स ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी ऑन एन एनवायरनमेंट या ऑन अ कंट्री? पॉजिटिव्स क्या होते हैं एक बिजनेस के? पॉजिटिव्स ये हो सकते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, गुड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। वो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू पे कंट्रीब्यूट करता है। कस्टमर्स के लिए नई चॉइसेस, नए ऑप्शंस, जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है, गुड। और मे बी एक्सपोर्ट्स पे कंट्रीब्यूट करता है, कंपटीशन इनकरेज करता है। यानी कि एक बिजनेस एक्टिविटी के होने से इकोनॉमी को या एनवायरनमेंट को दोनों साइड्स हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं किसी भी बिजनेस के। और हर बिजनेस को चाहिए कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को या पॉजिटिव साइड्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करे और नेगेटिव्स पे कंट्रोल। पोल्यूशन, अब जैसे पोल्यूशन जीरो तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पोल्यूशन ख़त्म कर दें या कोई बिजनेस पोल्यूशन करे ही ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बट एवरी बिजनेस शुड ट्राई टू मिनिमाइज the impact या negative impact on the environment। That's what a good or an ethical business should do। लेकिन ये क्या कह रहा है? A pressure group in country P believes that all business activity is bad for the environment। ये तो बहुत ही strict और बहुत ही कोई सख्त प्रेशर ग्रुप है। वो कह रहा है ये सब बुरे हैं, मतलब सब बुरे चल रहे हैं। It wants the government to do more
to control business activity. ठीक है, they are actually pressurizing the government that government should be more active in controlling the negative activities of a business. अब government क्या करती है? government फिर regulations, laws बनाती है, fines and penalties impose करती है. let's say अगर कोई business बहुत ज़्यादा pollution कर रहा है, या अगर वो रिवर में या सी में अपना वेस्ट डंप कर रहा है, या कोई भी गलत काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसके लिए फिर फाइन्स रखती है, पेनल्टीज रखती है. तो फिर वो बिजनेसेस सीधा चलते हैं ना. बिजनेसेस फिर ensure they actually ensure that they are not just disposing of their waste anywhere. They make sure that they minimize the pollution. They make sure कि वो natural resources, let's say coal है, oil है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, efficiently इस्तेमाल करें. ऐसा नहीं कि बस वो waste करें. समझ आए? तो गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट अच्छी भी होनी चाहिए फिर इसके लिए. सही है, केस समझ आ गया. इट्स अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी which manufactures aeroplanes. ग्रोथ करना चाहते हैं, कंट्री पी में स्टार्ट कर रहे हैं, बट कंट्री पी में प्रेशर ग्रुप इज वेरी एक्टिव. और जितना ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा मुश्किल होगा अटेम्प्ट, मतलब क्योंकि जिस कंट्री में प्रेशर ग्रुप्स ज़्यादा हों, या जिस कंट्री में आपको हर वक्त ये सोचना पड़े कि यार प्रेशर ग्रुप्स की अटेंशन आ सकती है, या कोई मीडिया एक्टिवली हम पे रिपोर्ट बना सकता है, अगर प्रेशर ग्रुप्स किसी कंट्री में ज़्यादा हों तो वहाँ चलना फिर बिजनेसेस के लिए मुश्किल भी होता है. हाँ, क्योंकि जाहिर है फिर हर वक्त वो एक प्रेशर रहेगा. और अगर आप अच्छे तरीके से चलते हो, अगर आपका बिजनेस बहुत एथिकल बिजनेस है, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है, और बिजनेस they always try to ensure that the negativities or the negative externalities are minimized, तो फिर शायद आपको प्रेशर ग्रुप तंग भी नहीं करेंगे. वो वाला सीन नहीं है कि आपको जबरदस्ती तंग करेंगे. समझ आ रहा है? अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर ग्रुप? पार्ट ए, व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर ग्रुप? लिखो, मैं लिखवा रहा हूं. These are the organizations these are the organizations which try to minimize or stop the unethical. These are the organizations which try to minimize or stop the unethical or illegal. These are the organizations which try to minimize or stop the unethical or illegal business activities. Unethical or illegal business activities which can cause harm to the society or environment. Which can cause harm to the society or environment. और डेफिनेटली फिर प्रेशर ग्रुप्स बहुत एक्टिवली नज़र रखते हैं, कोशिश करते हैं कि मीडिया हमारे सपोर्ट में हो. प्रेशर ग्रुप्स ये कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे टच में हो. अब ज़ाहिर है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अलग अलग एनजीओज होते हैं बहुत सारे. पार्ट बी, ये अब आप लोग बताओ मुझे. Identify two measures a government could use to control business activity. Identify two measures a government could use to control business activity. Business activity control करने के लिए what can a government do? They can impose taxes. Good. मतलब कुछ होते हैं ना, जैसे जो डेंजरस प्रोडक्ट्स होते हैं या हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स में डीमेरिट गुड्स कहते हैं, उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है ताकि उसकी प्रोडक्शन, उसकी कंजम्पशन कम से कम हो. एस्टेब्लिशिंग लॉज एंड रेगुलेशंस. कानून, अच्छा कानून. यस, ये रहा, लिख लिया. गुड. एस्टेब्लिशिंग, गुड. एस्टेब्लिशिंग लॉज एंड रेगुलेशंस. वेरी नाइस. सही है कि वो कानून बनाना जिससे जो बिजनेसेस को फॉलो करना हो, दे शुड नो दैट व्हाट दे आर
responsible for. Every business should know कि हमें ये चीज़ allowed है, ये चीज़ allowed नहीं है. Maybe imposing fines on unfair practices. ये भी एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए. Imposing fines on unfair practices. कोई unfair है, कोई illegal activity है, कोई environmentally damaging activity है, तो government can actually have that clear fine defined for कि भाई अगर आपने ये चीज किया तो फिर आपके ऊपर इतना फाइन लगेगा. अगर आपने हर किसी को, वैसे हमारे थोड़ा पाकिस्तान में थोड़ा ऑफ है इस चीज के ऊपर, लेकिन एवरी बिजनेसेस इंटरनेशनली जहाँ पे डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं सबको पता होता है कि भाई अगर हमने ये चीज की तो इतना फाइन लग जाएगा, नहीं करना. सही है. और स्ट्रिक्ट फाइन्स होते हैं, स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट. अच्छा, पार्ट सी. Identify and explain two reasons why objectives are important to businesses such as A and Z. Identify and explain two reasons why objectives are important to businesses such as A and Z. Tell me two reasons why objectives are important. Objectives important होते हैं, obviously important होते हैं. क्यों important होते हैं? Objectives are important for. Why are the objectives important to businesses? एक ऑब्जेक्टिव होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इट एक्चुअली मोटिवेट्स, बिकॉज इट गिव्स दैट सेंस ऑफ डायरेक्शन के जो आपका जाहिर है, अगर जैसे क्लास भी चल रही होती है तो एक टीचर का भी ऑब्जेक्टिव होता होगा ना कि भाई ये चीज इस तरह से लेके चलनी है, इसको इस तरह से यहाँ पे लेके एंड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है. क्या ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है? इसी तरह हर बिजनेस के लिए भी तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होने चाहिए. दे शुड नो वेयर एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव, वेयर दे आर ट्राइंग टू गो, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव. क्या क्या हासिल क्या करना चाहते हो बेसिकली. यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट. और नंबर वन, एक तो वो मोटिवेट करता है. फिर इससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो. अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो फिर आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, यू कैन कंपेयर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स टू सी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर एक बिजनेस ने ऑब्जेक्टिव रखा है कि हमें 40% या 30% सेल्स इंक्रीज करनी है, और जब विद इन अ ईयर लेट्स से, अब एक साल गुजरने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं दैट वी वर एक्चुअली प्लानिंग टू इंक्रीज आवर सेल्स बाय 30%. तो क्या वो सेल्स एक्चुअली 30% इंक्रीज हुई या सेल्स इंक्रीज नहीं हुई, या क्यों नहीं हुई, या क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ. तो फिर आप उस पर डिसीशंस भी ले सकते हो. आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि इससे शायद गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं. गुड. सही है. लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं. आपको पता होता है कि परफॉर्मेंस आपकी ऑन, जैसे अगर अभी ये वाली क्लास स्टार्ट हुई तो मेरे माइंड में कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि यार इसको हमें इस तरह से लेके चलना है. अब जब एक्चुअल क्लास खत्म हो जाएगी तो आई कैन कंपेयर माई ऑब्जेक्टिव विद द एक्चुअल क्लास. सो आई विल नो दैट कि क्या वो क्लास इफेक्टिव थी या वो इफेक्टिव नहीं थी, क्या वो मैं अचीव कर सका या अचीव नहीं कर सका. अपनी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो ना. और प्लस फिर आप डिसीशंस भी ले सकते हो कि अगर आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ. क्या हमारी मार्केटिंग में, जैसे अगर मैंने प्लान किया था कि 20% सेल्स बढ़नी चाहिए मेरे बिजनेस की, और अगर नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ी. क्या प्रमोशन में कोई इशू था, क्वालिटी में कोई इशू था, प्राइस में कोई इशू था, कस्टमर सर्विस में कोई प्रॉब्लम आया. आई देन ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम. समझ आया? यानी कि इसको कहते हैं, देखो मैं लिखवा रहा हूँ. रीजन वन, identify and explain two reasons why objectives are important to businesses such as A and Z. Objectives will be a source of motivation. Objectives will be a source of motivation for the airplane, for the business. Objectives will be a source of motivation for the business and its employees. Objectives will be a source of motivation for the business and its employees.
everyone in this aeroplane manufacturing business, everyone in this aeroplane manufacturing business will have clear targets to achieve, and therefore clear sense of direction, like basically what you are trying to achieve, what basically करना क्या चाहते हो basically. एक तो motivation होता है. Reason 2, objectives can be used by the business. Objectives can be used by the business as a performance appraisal tool. Can be used by the business as a performance, ये words आप चाहो तो याद कर लिया करो, performance appraisal tool के performance पे नजर रखने के लिए. Explanation: the actual performance can be compared with predefined goals, and this can improve the quality of decisions. अच्छा part D देखना. Identify and explain 3 advantages for country P of ANZ's decision to open a new factory. ये तो आसान है यार, अब ये तुम लोग बताओ मुझे. Identify and explain 3 advantages for country P, यानी कि मुल्क के लिए 3 फायदे of ANZ's decision to open a new factory. 3 advantages for country P. Tell me about it. Tell me the points. For country P, business को फायदा नहीं बताना, country को फायदा बताना है. तो बहुत आसान है, जल्दी बताओ. जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ, सही है, गुड. और बताओ. एम्प्लॉयमेंट और टैक्सेस और कंपटीशन और पता नहीं क्या क्या. और बाकी बिजनेसेस के लिए तो मतलब, क्योंकि अगर एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाता है ये एएनजी, तो डेफिनेटली फिर उसके लिए बहुत सारी सप्लाईज चाहिए होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस को और बिजनेस मिलेगा, है ना. कोई प्लास्टिक का काम, कोई स्टील का काम, कोई मेटल का काम, कोई वायरिंग, कोई टायर्स, कोई रबर, और भी कितने सारे कनेक्टेड बिजनेसेस होंगे जिनको फायदा होगा ना. फायदा होगा ना. गुड गुड गुड. एडवांटेज 1, क्या हम 1 वर्ड लिख सकते हैं? क्या मैं यहाँ लिखूं टैक्स? नो, नॉट अलाउड. 1 वर्ड नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. सही है. तो प्रॉपर एडवांटेज 1 सेंटेंस. The new aeroplane manufacturing factory will contribute to the GDP of country P. Will contribute to the GDP of country P. Will contribute to the GDP of country P. This will help the country. This will help the country to work towards economic growth
and developments. This will help the country to work towards economic growth and developments. The new factory, और क्या फायदा होगा? The new factory will create employment opportunities the new factory will create employment opportunities in country P. The new factory will create employment opportunities in country B. और इसकी explanation, employment opportunities से country को क्या फायदा होता है? What is the benefit? Why is it a benefit? Like if there are more employment opportunities, and why is it a benefit for a country? क्यों फायदा होता है? हैं? अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर इनकम्स बेहतर होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम हो जाता है, सोशल प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो जाते हैं, सच एज क्राइम एंड ऑल दैट, है ना? शायद एक्सप्लेनेशन, दिस विल, लाइफस्टाइल्स बेहतर होते हैं लोगों के, गुड, दिस विल रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, this will reduce the unemployment rate in the country. This will reduce unemployment rate and can help to minimize the social problems in the country. Help to minimize the social problems in the country. Advantage 3. The new factory will create demand for other connected businesses. The new factory will create demand for other connected businesses, such as tire supplier, such as, क्योंकि जाहिर है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, बहुत सारा, कितना एक एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता होगा, आप सोचो उसमें फोम्स और मतलब आई थिंक एवरीथिंग यार, सब कुछ ही चाहिए होता होगा एरोप्लेन बनाने के लिए, मतलब समझ गए मेरे ख्याल से क्या कह रहा हूँ? और एक्सप्लेनेशन, this can increase sales of other businesses and can lead to massive economic benefits. या ये भी इसका एक और वर्ड होता है वैसे इकोनॉमिक्स में, इसको कहते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कोशिश करता हूँ बिजनेस में यूज ना करूं, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। सुना है मल्टीप्लायर इसके सिर्फ एक फैक्ट्री होने से बाकी और कितने सारे बिजनेसेस हैं जिनको फायदा हो रहा होगा, तो उसका फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अब अगर एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनती है इतनी बड़े स्केल पे, तो हो सकता है कि प्लास्टिक सप्लायर्स जो हैं उनकी सेल्स बढ़ें, मेटल सप्लायर्स हैं उनकी सेल्स बढ़ें, टायर सप्लायर है उनकी सेल्स बढ़ें, फोम सप्लायर्स सीट्स वगैरह के लिए लेट्स से, तो उनकी सेल्स बढ़े, तो अल्टीमेटली हर जगह मतलब पूरे कंट्री के लिए फायदा है ना फिर तो। और ये जो मैंने आंसर लिखा है वैसे ये काफी पुराना ईयर है, मैं आपको बताऊं, मई जून 2013 है ना,
मई 2013 है ये। तो इतना पुराना ईयर है, थोड़ा सा सीधा सीधा और आसान होता था टू बी ऑनेस्ट। देखो ना कितना सीधा सीधा आंसर है। सिर्फ मैं आपको ये पुराना इसलिए करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका रिटन उस पर ना ग्रिप बेहतर हो जाती है, इसलिए पुराना करा रहा हूँ। और इतना ज्यादा कंट्री बेस्ड क्वेश्चन या इकोनॉमिक्स, अगर आप सोचो तो ये हम इकोनॉमिक्स में एंटर हो गए, बिजनेस से बाहर आ गए। तो ये बहुत अभी भी हो सकता है क्या है, कोर्स में तो है, लेकिन अब चांसेस कम होते हैं कि वो आपको इतना कंट्री बेस्ड पूछे। ज्यादातर बिजनेस सब्जेक्ट में वो आपसे बिजनेस स्पेसिफिक बात करेगा, क्योंकि हम ये इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ रहे। ठीक है कोर्स में है, और ठीक है ये आ भी सकता है एग्जाम में, और ये भी इसलिए भी करवा रहा हूँ ताकि अगर आ भी जाए तो आप स्टक ना फील करो। लेकिन ज्यादातर अब जो लेटेस्ट पेपर्स होते हैं वो बिजनेस पे फोकस्ड होंगे आंसर्स, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज, वी आर नॉट स्टडिंग इकोनॉमिक्स। इसलिए वैसे कंट्री के ऊपर और एग्जाम में भी ज्यादातर आपको बिजनेस पे ही सोचना होता है, मुल्क के बाद। रिसेशन इज, आप बताओ रिसेशन इज गुड और बैड? व्हाट डू यू थिंक? रिसेशन इज गुड और बैड? रिसेशन इज गुड फॉर बैड? इट डिपेंड्स। बैड फॉर बिजनेस बैड नहीं भाई, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या चीज है। अगर आपका इंफीरियर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, अगर आप सस्ते वाले प्रोडक्ट्स, जैसे अगर आप कोई सर्फ बनाते हो, डिटर्जेंट्स बनाते हो, जो आप लो प्राइस्ड डिटर्जेंट्स बनाते हो, लो प्राइस्ड सर्व्स बनाते हो, अब जाहिर सी बात है रिसेशन के टाइम जब लोगों के पास, जब उन लोगों की स्पेंडिंग पावर्स पे प्रॉब्लम आएगा, जब परचेजिंग पावर्स कम होंगी, तो they still have to buy some of the products. If they're not buying high priced detergent, if they're not buying high priced milk, they will have to buy low priced milk, they will have to buy inferior product, right? तो यानी कि हो सकता है कि रिसेशन कैन बी गुड फॉर सम बिजनेसेस। रिसेशन से कुछ बिजनेसेस का फायदा भी होगा जो सस्ते वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो यानी कि मैं रिसेशन को, आई कैन नॉट से रिसेशन इज बैड, आई कैन नॉट से रिसेशन इज बैड, बिकॉज रिसेशन कैन बी गुड एंड कैन बी बैड डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी आर टॉकिंग अबाउट, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह के बिजनेस की बात कर रहे हैं। समझ आए? यानी कि सेम चेंज कैन बी अ गुड चेंज फॉर वन बिजनेस एंड अ बैड चेंज फॉर अनदर बिजनेस। सो समझ आ गया मेरे ख्याल से। यानी कि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस के बारे में सोचने आना चाहिए हमें। सही है। और पार्ट ई क्या कह रहा है, देखो पार्ट ई। डू यू थिंक डू यू थिंक दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटी इज बैड फॉर द इन्वायरमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। डू यू थिंक दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटी इज बैड फॉर द इन्वायरमेंट? Justify your answer. So do we need to write a one-sided answer or a two-sided answer? हाँ, one-sided लिखना है, two-sided लिखना है? क्या करूं, सिर्फ बुराई कर दूं? Two-sided. We have to stay two-sided, and we will say कि हाँ यार वो environment के लिए बुरा भी होता है, थोड़ा सा off भी है सीन, लेकिन उसके फायदे भी हैं environment को। ठीक है, दोनों साइड लिखेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे। और आई थिंक, डू यू थिंक दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटी इज बैड फॉर द इन्वायरमेंट? आप सोचो कि हमारे कंट्री में कोई बिजनेस ही ना होता, आप खाली एक सिचुएशन सोचो, कोई बिजनेस ही ना होता तो कैसे चलते? मतलब क्या आर वी एक्चुअली सराउंडेड बाय बिजनेसेस, राइट? मतलब हमारे कपड़े, हमारे फूड प्रोडक्ट्स, हमारे लाइट्स, एयर कंडीशनर्स, फर्नीचर, स्पीकर्स, माइक, लैपटॉप्स, आईपैड्स, दीज आर ऑल, मतलब दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ सम बिजनेसेस, राइट? तो अगर बिजनेस ही ना हो तो फिर कैसे, मतलब चलोगे कैसे? मतलब हाउ हाउ विल एन इकोनॉमी वर्क, हाउ विल पीपल वर्क? कैसा तो नहीं चल सकते। बिजनेसेस होने चाहिए मेरे ख्याल से, दो अगर कंक्लूड करूंगा इसमें, होने तो ऑब्वियसली चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन हाँ दे शुड ट्राई टू इंश्योर कि वो इन्वायरमेंटल हार्म या इन्वायरमेंटल डैमेज कम से कम करें। अ बिजनेस शुड इंश्योर कि उनकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सब बुरे, वो फिर सीन, मतलब बोलने की बात सही नहीं है मेरे ख्याल से। सही है, मैं लिखवाता हूँ, लिखूँ। और अगर आपने ऑब्जर्व किया, ये जो पुराने सवाल थे मई 2013, इसमें इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा केस से लिंक बैक करने के लिए थोड़ा सा जनरल बेस्ड होता था। अब उसने जो रीसेंट पेपर्स होते हैं, जो हमने रीसेंट क्वेश्चंस भी किए थे, उसमें वो केस बेस्ड ज़्यादा होता है। पहले थोड़ा सा ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी रिटन
ग्रिप बिल्कुल स्ट्रांग रहे. डू यू थिंक दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटी इज बैड फॉर द इन्वायरमेंट? लिखो, मैं लिखवा रहा हूं. A business activity, a business activity can cause negative impacts. A business activity can cause negative impacts on the environment, such as air pollution during the manufacturing. A business activities can cause negative impacts on the environment, such as air pollution during the manufacturing process of aeroplanes, or due to the use of natural resources, or due to the use of natural resources such as coal and oil. Due to the use of natural resources such as coal and oil. Higher the level of business activity, faster will be the rate of depletion. Faster will be the rate of depletion of natural resources. Faster will be the rate of depletion of natural resources. यानी जितना ज्यादा business activities होंगी उतना ज्यादा आपके ये भी अच्छा पॉइंट लिखा है इसने, deforestation to construct roads. गुड, deforestation के बारे में भी लिख सकते थे. समझ आई? यानी कि पहले मैंने नेगेटिव साइड समझानी है कि एक बिजनेस एक्टिविटी के नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं. However, a business activity can also contribute positively towards the environment, such as investment on new technology, such as eco-friendly machines. However, a business activity can also contribute positively towards the environment, such as investment on new technology, such as दो दफा हो गया, such as investment on new technology, and environment friendly ways of working. Overall, I think you think and I think. Overall, I think that a business activity. Overall, I think that a business activity can have both the positive as well as negative impacts. I think that a business activity can have both the positive as well as negative impacts, and the government should ensure the government of a country should ensure that policies are designed
a country should ensure that policies are designed to maximize the positive impacts of business activity. To maximize the impacts of, the positive impacts of business activity. ये भी लिख सकते थे that every business should try to maximize the positive impacts and minimize the negative impacts. या ये भी लिख सकते हैं कि government should actually try कि जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको कम से कम उसको मिनिमाइज कर सकें एंड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें. समझ आया? और थोड़ा सा वैसे ये पुराना पेपर है, मई जून 2013, मई जून टू 2013 है, तो बहुत जनरल आता था पहले. सिर्फ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने के लिए, कंटेंट प्रैक्टिस करने के लिए ये मैं करवा रहा हूँ. और ये थोड़ा सा अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये इजी होते थे क्वेश्चंस एज कंपेयर टू रीसेंट क्वेश्चंस. ठीक है, just copy this down and let me know.